Good morning, everyone. Welcome to the morning on call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there was recovery in the market, mainly because of the bank Nifty. Both the indices have closed in green. Nifty was nearly positive by 47 points and bank Nifty was up by 485 points. So if you look at the chart pattern now, for the last 3-4 days, we can see that the Nifty is taking support at that 50-day moving average in the daily chart. So this makes, and I maintain that whenever this Nifty moves above 19,500 level, we should be seeing some short covering in the market, and this can take the Nifty towards 19,800 level. Over and above, if 19,800 level is taken out, then 20,000 is visible on the charts. But then right now, the move for the Nifty is from 19,500 to 19,300. So we are talking of another 300 points upside move on a close above 19,500 level. On the way down, 19,250, which is the almost the previous week low, is the support. And if you talk of the immediate support for today's trading session, then the 50-day moving average, which is near 19,000. 351, that will be the support for the Nifty for all the long positions which we are holding. Coming to Bank Nifty, so Bank Nifty has given a very strong bullish candles close and it has scaled above the 44,000 level. So 44,479 was the close for the Bank Nifty. And if you see the Bank Nifty in the previous occasion, 44,500 was a breakdown level from where the Bank Nifty slipped and it almost came to the lows of 43,600. So now again the Bank Nifty has witnessed a strong pullback. So in the near term, Bank Nifty has to trade above 44,500 levels. So today being a weekly expiry, if we see it and we looking at the OI data, it looks like Bank Nifty may close above 44,500 level. So I believe if 44,500 level is taken out, then there will be further strong upside in the Bank Nifty. We can talk about another 1,000 points rally in the Bank Nifty. So the bias for both the Nifty and Bank Nifty is positive, and any intraday correction should be viewed as a buying opportunity, is what I believe. Coming to derivatives data, so in yesterday's session there was a one second. So in coming to derivatives data, so in yesterday's session, there was a short covering in the Nifty future to the tune of 0.78%, and the put call ratio, which declined below 1, has now gained, has closed at 1.05. So this is slightly positive. The writings has been seen at 19,400 price, 19,400 strike price. So that is the support, and resistance at 19,500 call option. So that is the resistance. Bank Nifty seen a very strong close. So Bank Nifty, there was a long built up to the tune of 3.64%, which is an increase in contracts by 5,400 share, 5,400 contracts. The put call ratio has also gained from 0.83 to 1.27. So that is quite very strong numbers. And from the writing point of view, 44,500 is there is a call writing. So that is the resistance, and at 44,000 there is a put writing. So that is the support. The stocks which are in ban are BAIL, BHEL, Delta Corp, Escorts, GNFC, Hindustan Copper, Indiabulls Housing Finance, India Cement, Manappuram, Metropolis, PNB, and Sun TV. So there are a lot of stocks which are in the ban. Lastly, the stocks which we yesterday saw was the Federal Bank. So Federal Bank has given a very strong breakout after 6 months kind of a range. So in the near term, I think Federal Bank can easily move by another 20-25 points from the current level. So it's a quite a positive. After that, Indian Auto is something which is very good on charts. I think Indian Auto can also see some good amount of positive momentum from the current level. So we are having both the buy on decline kind of strategy for both these stocks. So that's the technical view. I hand over to Archana madam for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, teams. A few updates from my side, starting with NHPC. The company has signed an MOU with Andhra Pradesh Power Generation Corporation for renewable energy projects in the state. The MOU allows parties to form a JV to implement techno-commercially viable pump storage hydropower projects and other renewable energy projects allotted by the state. On Vasco Engineers, the company has received an order worth 605 crores from the Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation for the construction of Lohia Medical College and Hospital.
including a hospital and residential building in Spau. On Coforge, as per media sources, Baring PE will offload 26% stake via block deal. Baring PE was acting as an investor, and this will remove the overhang on the stock. However, we were expecting Baring PE to be replaced by another investor. We believe that in the near term, this development will not have any impact on the fundamentals. If the growth falters in the long run, it will be viewed negatively. We have hold rating on the stock with a target price of 4650. Next on PVR Inox, the South cinemas are requesting the government to consider a hike in the ticketing price. If this is considered by the government, it will be viewed as a long-term positive ASP for multiplexes. This coupled with the robust Q2, we maintain a positive view on PVR Inox and have a target price of 1,805. And lastly, on Procter & Gamble Health, the company reported their Q4 earnings. The revenue came in at 301 crore, up by marginal 1.8% YOY, while its net profit was down by 28% on same quarter last year at 29 crores. The board has recommended dividend of 50 rupees per share for the financial year ended June 30, 2023. So that's it from my side. Now I hand it over to Kshitija for further research updates. Thank you, and over to you, Kshitija. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Few updates from my side. First update on Reliance Industry. Sovereign Wealth Fund Qatar Investment Authority has agreed to invest 8,278 crore, that is around $1 billion, into the retail arm of Reliance Industry Limited, and marking a fresh round of investment into Reliance Retail Venture Limited. After the country's largest retailer raised 47,265 crore in 2021, this Qatar Investment Authority, that is QIA's invest values is RVL. It's around 8.28 trillion, or like $100 billion, twice its 4.21 trillion valuation in 2021. So this Qatar Investment Authority's investment will translate into 0.99% stake in RRVL on fully diluted basis. So this update came yesterday. The next update on GAIL India. This GAIL India plans to capital expenditure 30,000 crore, mainly in pipelines, petrochemical project, and city gas distribution over the next 3 years. So the company's total capital expenditure for financial year 23 was 10,000 crore. We are targeting to incur capex 30,000 crore in next 3 years, mainly this update given by CGTA project operational capex, equity contribution in the group companies. So this update is while addressing the shareholders at the AGM given by the CMD Sandeep Kumar Gupta. The next update on sugar stock, that Renuka, EIDBI and Balrampur Chini, India is expected to ban mills from exporting sugar in the next season, beginning October. So halting shipments for the first time in 7 years as a lack of rain has cut cane yields. So three government sources said. So India's absence from the world market would like to increase the benchmark prices in New York and London that are already trading around multi-years high and triggering fears for the further inflation on global food market. The next update on Bandhan Bank. So Bandhan Bank yesterday announced that it will enter into co-lending business, for which it will tie up with a couple of NBFCs. So announcing this at the bank's Foundation Day program, and its MD CEO Chandra Shekhar Ghosh said that co-lending business will cover all verticals in which loans are given. So company will select a couple of NBFC and they will soon tie up with them, which will started its journey 8 years ago, has 6,100 banking outlets across 35 states and union territory at present. The next update on Muthoot Finance. Muthoot Finance flagship company, Muthoot Pancham Group, yesterday said its new digital finance platform, Muthoot FinCorp One, will introduce insurance, personal loans, two-wheeler and housing loans in next 6 months. So Muthoot FinCorp One has reported over 20,000 daily transactions and over 2 lakh app downloads.
So in next 6 months, it's planned to introduce these new products to reach around 80,000 daily transaction and million app downloads. The next update on TVS Motor. TVS Motor maker iQube electric scooter is expanding its play in the e-two-wheeler market with the launch of its first born electric two-wheeler crossover between motorcycle and scooter, which is aimed at young customer in the premium end of the Indian and international electric two-wheeler markets. So this launch of TVS X will be followed by the introduction of the latest generation of iQube EV, as well as more products in the electric three-wheeler, cargo, and even electric bicycle space. So this update come from TVS. So this is a positive for TVS Motor. The next update on Tata Communication. Tata Communication announced opening of its cloud-based and worldwide 5G roaming laboratory. So this will allow mobile network operators to test a 5G standalone network, which use cases prior to rolling out service to their customer. And in order to enable mobile network operators in relevant mobility experience that benefit their consumer and enterprises customer. So Tata Communication is utilizing the potential of 5G in this way. The next update on Oriana Power. So this Oriana Power Limited has won a contract worth around 138 crore from Bharat Cooking Co Limited to set up 20 megawatt AC ground mounted solar photovoltaic power plant at Dugda Washery area, Dhanabad, Jharkhand. This EPC phase of this project is plotted for the completion within a 12 months. This comparative contract encompasses spectrum the activities ranging from designing, procurement of solar equipment, construction, then meticulous testing, seamless commissioning, and integration with the transmission network, and steadfast 5-year operation which maintains a commitment. The next update on Torrent Pharma. So the US FDA has granted voluntary action indicated classification to Torrent Pharma's manufacturing site in Dahej, Gujarat. This Dahej site was earlier placed under official action indicated, that is OAI classification, based on March 2019 inspection outcome. So this site was re-inspected by US FDA between May 17 to May 25, 2023, and the official had issued from Form 483 with the two observation. The next update on JB Pharma. USFDA has approved JB Pharma's abbreviated new drug application for dexopin hydrochloride capsule. The next update on Motors. So CCI closed a case against Tata Motors on alleged abuse of dominant position with respect to agreement with its authorized dealer. The next update on Ratan India, the board has approved appointment of Ashok Kumar as the CEO of the company. Then HCL Tech company collaborates with AWS to drive Gen AI adoption. The next update on Indigo. Indigo company to recommend New Delhi to Hong Kong flights from October 5th. Then Vedanta Anil Agrawal pledged to pay Zambia creditors before retaking a mine. Then SGS Enterprises promoter Evergraph Holdings sold 29.53% of its stake in its open market, reducing its stake to 4.60%. Then Shriram Properties Omega TC Sapre Holdings sold 12.8 lakh shares at rupees 83.58 per share. Then last update on Sterling and Wilson Renewable. So promoter Khudarshed Yazdi Dhruvala sold 20 lakh shares on August 18. So that's it from my end. Now I will hand over to Hitendra for Hindi conversion. Thank you and over to you, sir. Thank you and good morning everyone. इस कॉल को हिंदी में स्टार्ट करते हैं एनएचपीसी के साथ। एनएचपीसी ने कंपनी का एमओयू साइन किया आंध्र प्रदेश पावर के साथ, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएगी। द एमओयू जो पार्टीज के बीच में लिखे टेक्नो कमर्शियली वायबल पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए।
सेकेंड वास्कॉन इंजीनियरिंग पे कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 605 करोड़ का बीआर मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली कि हॉस्पिटल सेटअप करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे लोहिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहेगा सफावर जोन में। तो फोर्स के लिए माइल्ड न्यूट्रल या नेगेटिव पूछ सकते थोड़ी सी डेयरिंग पी है जो अपना स्टिक ऑफर करना चाहता है 26% करेगा और बेरिंग पी एज इन्वेस्टर था को फोर्स में सो ओवर आएंगे वो करेगा स्टॉक कैसे सेकेंडली बेयरिंग पी को एक रिप्लेस करेगा दूसरा इन्वेस्टर जो एक करोड़ तो स्टेक लेगा तो हमें लगता है नियर टर्म में डेवलपमेंट थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं करेगा फंडामेंटल में। हाँ बट अगर ग्रोथ स्टोरी में थोड़ा लॉन्गर रन पे अगर इश्यूज आते हैं तो ये नेगेटिवली हो सकता है। तो करंटली हमारी होल्ड रेटिंग है 46 के प्राइस टारगेट के साथ। पीवीआर आइनॉक्स पे ये न्यूज़ है साउथ सिनेमाज रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट को प्राइस हाइक्स के लिए और एक कंसर्वेटिव कहते हैं गवर्नमेंट ने व्यू के लॉन्ग टर्म पे जो इनके मर्डर टैक्सेस के लिए जो अगर हम देख रहे हैं जो रोबस्ट Q2 के चलते हमारा व्यू पीवीआर आइनॉक्स पे पॉजिटिव आता है तो 5 की प्राइस टारगेट के साथ। नेक्स्ट अपडेट है प्रॉक्टर एंड गैम्बल पे अगर हम Q4 FY23 कंपनी ने रिपोर्ट किया 200 करोड़ का रेवेन्यूज और 2% YOY पे ग्रोथ हुआ नेट प्रॉफिट जितने 27% डाउन है 29.28 करोड़ से। बोर्ड ने ₹50 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया शेयर सरकार ने। अगली अपडेट है टीवीएस मोटर्स पे टीवीएस मोटर एक नई स्कूटर लॉन्च की है ई स्कूटर में जो कि डिजिटली कनेक्टेड फीचर्स के साथ है। इंडिगो के लिए ये अपडेट है कि कंपनी ने एक नया सेक्टर ओपन किया है दिल्ली हांगकांग सेक्टर जो कि अक्टूबर 5 से स्टार्ट होगा। HCL टेक में कंपनी ने कोलैबोरेट किया है AWS के साथ जो कि ड्राइव जेन एआई बेस्ड पे रहेगा एंड ड्राइव जेन एआई बेस्ड रहेगा। जीबी केमिकल्स के लिए यूज है जीबी केमिकल को अप्रूवल मिल गया है जो कि न्यू ट्रक एंडाइल के लिए एंडाइल अप्रूवल मिल गया जो कि डॉक्टर सेंटर कैप्सूल्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट है पीएनबी हाउसिंग के लिए इकरा ने पीएनबी की रेटिंग को रिवाइज कर दी है टीयर 2 बॉन्ड्स के लिए पॉजिटिव रहेगा और आउटलुक अच्छी दिखाई दी है। नेक्स्ट है अतुल ऑटो के लिए सोसाइटी जनरल ने अतुल ऑटो नियर अबाउट 3 लाख शेयर बाई किए हैं 410 के भाव पे। वेदांता के लिए न्यूज अनिल अग्रवाल ने अपने प्लेजेस को भेज दिया है जाम्बिया क्रिकेटर्स को और उनकी माइंड में ऑफर रीटेक किया है। रेटेक के जो प्रमोटर है यास्मीन मिर्जा ने एक्वायर किया है गिफ्ट के लिए 16% से जो कि शाहिद अहमद मिर्जा से एसजीएस एंटरप्राइज के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना स्टेक ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया 30% से 5% पे आ गया है। श्रीराम प्रॉपर्टीज के लिए भी न्यूज है जो ओमेगा टीसी सबरे होल्डिंग्स है उन्होंने कुछ 10 लाख शेयर सेल किए हैं। एसडब्ल्यू सोलार के भी प्रमोटर ने नियर 20 लाख शेयर ओवरऑल सेल किए। रतन इंडिया के बोर्ड ने अप्रूव किया कि अपॉइंटमेंट अशोक कुमार का सीएफओ में कंपनी के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो अगर हम देखेंगे तो कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उन्होंने बाई करना चाहते हैं 8278 करोड़ ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास का रिलायंस रिटेल का जो वेंचर रिलायंस रिटेल वाला उसमें करिए। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं 1% का स्टेक बाई कर रहे हैं तो 82 का वैल्यूएशन दिख रहा है और क्यूआई के चले फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस का RRBL ने कहा है। सेकेंडली गेल ने कहा है कि वे प्लान कर रहे हैं एक्सपांड करने के लिए कैपिटल एक्सपेंशन जो कि 30,000 करोड़ रहेगा मेनली उनकी पाइपलाइन से पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स के जाएगा सीडी कैश डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगले 3 साल के लिए कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ के आसपास तक का FY23 में कहा है और वो टारगेट कर रहे हैं 30,000 का केपेक्स अगले 3 साल में मेनली पाइपलाइंस और ऑनगोइंग पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में रहेगा सीजीडी प्रोजेक्ट्स के लिए। श्री रेणुका शुगर हम बोले चीनी 19 के लिए है एक न्यूज़ है कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है इनकी बैन को मेल्ट करने की जो कि शुगर एक्सपोर्ट की गई है अगले सीजन में स्टार्ट होगा जो अक्टूबर के लिए शिपमेंट होल्ड कर रहे फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे 7 ईयर में बिकॉज के रेंज के लैक की वजह से जो कि रेन फ्लड दिखे जिसके वजह से शुगर की गवर्नमेंट को लग रही थोड़ी सी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी और थोड़े से उसमें डिस्पाइट दे सकती है। इसके चलते गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा है कि इंडिया देखा जाए तो वर्ल्ड शुगर में अच्छा एक्सपेक्टेड हाई शुगर है। हम बेंचमार्क भी देख रहे हैं न्यूयॉर्क लंदन में वहाँ पे प्राइसेस ऑल टाइम हाई शुगर्स की पहुंच रही जो कि जो फियर है इन्फ्लेशन के चलते ग्लोबल फूड मार्केट्स में। बंधन बैंक ने भी कहा कि वेनेसडे को उन्होंने अनाउंस किया है कि को लेंडिंग बिजनेस में आ रहा है जो कि टाइप करेंगे एनबीएफसी के साथ और इस अनाउंसमेंट के बाद जो फाउंडेशन डे प्रोग्राम था एमडी सीईओ चंद्रशेखर जी ने कहा है कि बैंक ने कंपनी ऑफ एनबीएफसी से टाइप भी कर लिया है और उन्होंने जर्नी 8 years अगो स्टार्ट की थी 6100 बैंकिंग आउटलेट्स के साथ अक्रॉस 35 स्टेट्स में प्रेजेंट है बंधन बैंक। मुथूट फुटकर की जो फ्लैगशिप कंपनी है मुथूट कॉर्पोरेशन ग्रुप उन्होंने कहा कि न्यू डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म जो कि मुथूट फिनकॉर्प वन है जो इंट्रोड्यूस करेगी ऑल इन वन 360 डिग्री अप्रोच है बेसिकली अप्रोच करे तो इंश्योरेंस पर्सनल लोन टू व्हीलर लोन हाउसिंग में अगले 6 मंथ में मुथूट फिनकॉर्प ने पर रिपोर्ट किया 20,000 डेली ट्रांजेक्शन होते हैं और 2 लाख ऐप्स डाउनलोड हो चुके हैं पिछले 6 महीने में। उनका प्लान है ये नई प्रोडक्ट्स नियर अबाउट 80,000 डेली ट्रांजेक्शन और 1 लाख ऐप्स तक डाउनलोड्स के लिए।
टाटा कम्युनिकेशन के लिए न्यूज़ है कि उन्होंने एक ओपन किया था क्लाउड बेस वर्ल्ड वाइड 5G रोमिंग लेबोरेटरी और ये अलाउ करेगा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को टेस्ट करेगा 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क के साथ जो यूज केसेस रहेगा प्रायर टू रोलिंग आउट द सर्विस टू कस्टमर। और इन ऑर्डर हम देख रहे हैं इनेबल मोबाइल नेटवर्क के लिए एक रीनियन मोबाइल मोबिलिटी एक्सपीरियंस रहेगा और बेनिफिट इनके कस्टमर्स को कर सकता है। टाटा कम्युनिकेशन यूटिलाइज करें कमिटेड 5G के लिए। ओडियना पावर को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 138 करोड़ का भारत कोल लिमिटेड से जो कि सेल करेगा 20 मेगावाट पे एसी ग्राउंड पाउडर से पीवी से जो कि पावर प्लांट रहेगा दुधवा वाशिडीना धनबाद झारखंड में रहेगा ईवी फ्यूजन में देख रहे हैं तो अगले 12 मंथ्स में ही कम्प्लीट होगा। ट्रेंड फार्मा के लिए ये न्यूज़ है कि उनको एक ग्रांट किया गया वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटर क्लासिफिकेशन जो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दहेज में और दहेज साइड अर्लियर को एक ऑफिशियल एक्शन इंडिकेशन के इसको प्लेस किया गया था मार्च 2019 से। सो ये साइट को वापस इंस्पेक्ट किया गया है था 2023 में और ऑफिशियली फॉर्म 83 में 2 ऑब्जर्वेशन इशू किए गए हैं। टाटा मोटर्स पे लास्ट ईयर गया सीसीओ ने जो केस था उसको क्लोज कर दिया है। टाटा मोटर्स की जो उनकी अभी जो डोमिनेशन के लिए वो केस किया गया था और उसको के लिए अथॉरिटीज ने डीलर्स ने इसे रिपोर्ट किया गया था। सो केस क्लोज कर दिया सीसीओ ने। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द मॉर्निंग कॉल।